I can change my view. My lord, this is what has been. I do not refer to Chirag Simil because a serious objection was taken, but it is said, yes, your lordship can change your views. It is there in the judgment of my lord Mrs. Mansoor Ali Shah in the Chirag Simil case. पठान की एक ही जबान होती है. Yes, but the views can change. You have completed your... My lord, that's my submission. इनके बाद कौन करेगा? Mr. Makhdum Ali Khan, the counsel for the review petitioners, has completed her arguments on behalf of the SIC respondent. SIC? No other respondents, no other petitioners would argue? नहीं वो इन्होंने करना था. My lord, on behalf of the Election Commission, I have submitted written formulations with detailed arguments, and those may be taken as my submissions, my lord. And my written submissions are also there, my lord, in CMA number 3104, my lord. On record, my lord. ठीक है. Lordship, on behalf ये of जरा please note कर लें so that there is no right of rebuttal because they've all given up their right. Lordship, आपसे arguments of Makhdum Ali Khan. Lordship, on behalf of petitioner Pakistan People's Party, I will submit the written argument synopsis by tomorrow. रिटन आर्ग्यूमेंट उनको पहले दे देना, फिर वो जवाब भी तो देना है ना. उन्होंने आपको मिल गए सारे रिटन सबमिशन? वो हमें कुछ नहीं मिला. आपको लेना होता है, वो आपको वहाँ से सबमिट लेना होता करेंगे. जी सर, आपको वहाँ से लेना होता है. नहीं सर, सबमिट करेंगे तो लेंगे ना. चले आप अपने तो ECB ने कर दिया है ना. I'll start tomorrow. Given them to learned counsel. I'll start tomorrow and once they give it, क्योंकि ये एक दिन में तो वैसे ही नहीं खत्म होगा. Mr. Faisal Siddiqui said that आप आज he ले will लें, start जो भी लेना है. जी, arguments से जो tomorrow. No, I That will have to be stated. Yes. So your lordships have not heard the Yes, this will not be this. हम आपसे सिर्फ कह रहे हैं कि आप ऑफिस जी जी, इनकी ड्यूटी है जी, ये हमें दे दें. कल 11:30 फैसल. जी जी, थैंक यू सर. सब ये इनके पास सैंपल नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो नहीं कंटेस्ट कर सकते थे ऑन दैट पर्टिकुलर सैंपल. फिर उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी क्या? No, your ladyship. They were issuing certificates. तो इसका मतलब है पार्टी तो मौजूद थी. They were issuing certificates to their candidates. लेकिन उनके पास सैंपल नहीं था. तो इसकी क्या लीगल पोजीशन होगी? Your ladyship, they then contested the elections as independent candidates, and the facts are that after the election, they joined. Some of them wrote PTI as their political party. That is, my lord, Mr. Justice Mandu Khel's judgment, where his lordship draws a line of distinction. As far as the majority judgment, which is the judgment under review before your lordship, all 80 candidates were allowed to join PTI after the time limits. 41 candidates were allowed to join PTI after the time limits specified in the constitution, and the allocation of seats was made entirely to PTI. So the submission over here was that PTI was not a petitioner in any of the three forums, including the Supreme नहीं, Court. मैं उस point of view से नहीं पूछ रही. My point of view is when they were not allowed to contest election on their own symbol, तो वो political party तो that still exist अभी तक है, वो मौजूद है. अभी तो शायद उन्होंने election वगैरह भी कर लिया हो. उस वक्त वो political party थी कि नहीं, खत्म हो गई थी? Your ladyship, सिंबल का एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या पोजीशन होती है? Your ladyship, the political party existed, but it had not been granted a symbol in view of the judgment of this honorable court in the symbols case to which your ladyship was up. एक खास सिंबल के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे सिर्फ. But ये हर्डल उनके रास्ते में आ रहा था. जी, and they after they were elected as independents, as your ladyship points out, since the political party existed, they could have joined that political party. All of them could have joined PTI, but they did not. They joined SIC, and when they joined SIC came to court that the seats be allotted to it. SIC तो खुद ही नहीं थी उधर. जी, यही सबमिशन है. एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और ये
दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मेंबर को ज्वाइन कर रहे थे. That is the submission, that they could have joined PTI but they did not. They could have come to the court but they did not. PTI could have come to the court but it did not. And in view of this, allocating them the reserved seats on the basis of the present proceedings where they were not a petitioner, and allowing these candidates, or at least a large part of them, to join a political party within the time, outside the timelines provided in the Constitution, is clearly contrary to the provisions of the Constitution. Those timelines had to be adhered to, and as my Lord Mrs. Mandu Khail and my Lord Justice Yahya Afridi and my Lord Mrs. Aminuddin Ahmad and Naeem Afghan held, these were sacrosanct timelines provided in the Constitution. मुख्तार साहब, जहाँ तक ये सिंबल्स की बात है, इन माय जजमेंट पैराग्राफ 15 and 16 मैंने इसको डील किया कि ये सिंबल इज ओनली टू रिकॉग्नाइज द कैंडिडेट. वो किसी सूरत किसी पार्टी को डिप्राइव नहीं करता अगर किसी को सिंबल ना मिले. पार्टी एक ही सूरत में खत्म हो सकती है कि वो रेफरेंस फाइल हो और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे. इसके अलावा पार्टी खत्म हो ही नहीं सकती अनलेस कि वो खुद अपने आप को खत्म कर दे. तो पार्टी का वजूद तो है किसी भी पार्टी के. I'm not disputing that. So the candidate, the party can issue. देखिए असल में होता है कि हम थोड़ा सा, मैंने जो समझा, अपनी बात कर रहा हूँ, हम ये समझते रहे कि शायद पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है. पार्टी नहीं कंटेस्ट करती, कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं ऑन द सिंबल ऑफ पार्टी, ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी. अब अगर पार्टी का सिंबल ना हो तो सिंपली सर्टिफिकेट जारी कर सकता है टू असिस्ट दैट कैंडिडेट, और वो उस पार्टी का कैंडिडेट तस्वुर होता है. तो सिंबल बेसिकली फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द जनरल पब्लिक होता है. It is not to disfranchise the party. My lord, that's... मैंने 15 और 16 में जी सर, आपने भी किया है. इस हवाले से अगर आप देखिए पीटीआई की अब भी कोई 4, 5, 6 कैंडिडेट जो डायरेक्टली पीटीआई के कैंडिडेट थे, उन्होंने उस हैसियत से कंटेस्ट किया. दे डिड नॉट जॉइन द एसआईसी, और पहले से उन्होंने रिजर्व सीट के लिए अप्लाई भी किया. नॉमिनेशन पेपर्स भी आई है. जो खातून ने एप्लीकेशन की कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं एसआईसी, वो उनके इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये पहले नॉमिनेशन पेपर पीटीआई की तरफ से जमा किए थे ऑन रिजर्व सीट. फिर वो रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे स्विच ओवर किया जाए कि मैं एसआईसी की तरफ से हूँ. तो सवाल ये है कि पार्टी तो बैन नहीं थी, पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया. 5-6 कैंडिडेट पहले से उस पार्टी टिकट पे आए, बाकी 80 वहां चले गए. तो ये तो खैर ये खुद अपने आप से पूछे कि वहां जाने की बजाय इधर क्यों ज्वाइन नहीं किया. सपोज अगर वो सारे मान लें कि इंडिपेंडेंट थे, दे कुड हैव इजीली जॉइंड दिस पार्टी, तो ये मसला ही ना होता. और दूसरी बात ये कि वो जो साहब थे, जो पार्टी सिख के सरबराह थे, वो समझ में नहीं आई कि वो इंडिपेंडेंट क्यों खड़े हुए. अगर वो एक अकेले भी अपनी पार्टी से खड़े होते, जीत जाते, तो आज मसला ना. Your lordship identifies Your Lordship identifies that on page 229 in paragraph 18 of Your Lordship's minority view. Your Lordship has identified that. My Lord, the point... एक क्वेश्चन जो माय यंगर ब्रदर, कि वो जो पीटीआई के डायरेक्ट कैंडिडेट्स हैं, मसलन गौर साहब थे या बाकी, उन्होंने क्लेम की है कोई सीट वहाँ इलेक्शन कमीशन में इन सीट्स में से? Not that I know of, my Lord. Not that I know of. इसमें क्लेम तो नहीं करना होता ना. अगर एक पार्टी अपने रिजर्व सीट की लिस्ट बमाए नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर दे, मेरा व्यू ये था कि दिस इज द ऑटोमेटिक जॉब ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि वो बगैर किसी से पूछे देखे किसके कितने सीट्स बन रहे, कितने कैंडिडेट्स कामयाब हुए, उनकी लिस्ट बनाए, उस लिस्ट के मुताबिक तकसीम कर दे. दैट्स ऑल. My Lord, yes, but my Lord, Your Lordship and my Lord Mrs. Naeem Afghan note that in your judgment, in your opinion as well, that these there are number of these candidates who had contested as independents and had never joined SIC, which included, according to Your Lordship's opinion, Mr. Gohar Khan was the head of the party. Now,
in terms of symbols, my lord, your lordship's view and what caused the problem, and as your lordship said, that had the joint PTI, this issue may not have arisen, is noted in your lordship's opinion on paragraph 18 on page 229. My lord, the doctrine invoked for doing all this, besides Article 187 of the Constitution, was the doctrine referred to as the doctrine of constitutional fidelity. That now, fidelity is a bit of an emotionally charged word. Now, fidelity means faithfulness. And this is invoked, my lord, on pages 134 in paragraph 6, pages 182 and 83 in paragraphs 99 and 100, and page 190 in paragraph 117. My lord, in US, where this doctrine originated, it is at times used by the conservatives as an argument against the doctrine of the living constitution. Living constitution means interpreted according to the needs and changing circumstances of the time. And some of those who take the view that the original intent should be followed take the view that there must be constitutional fidelity. Fidelity not to the personal philosophy of a particular judge or a group of judges, but fidelity to the text of the Constitution. Fidelity to the words used in the Constitution. And our submission over here is that on the basis of this doctrine, one cannot go beyond the text of the Constitution, and the text of the Constitution is very, very clear in that regard. This honorable court itself, in a 7-member bench case, in that of Hamza Rashid, which is, my lord, volume 3, tab 12. Volume 3, tab 12. Made a distinction, and I will draw your lordships to that. This is a judgment reported as PLD